I, I request the audience to kindly rise, and I request our Honorable Minister and the Joint Secretary to kindly grace the dais. Thank you, everyone. A very good afternoon, everyone. We welcome you all to the inauguration of Technology Development Accelerator and Training Center. We start today's event with invocation. I call upon stage Kumari Nityashri Suresh, a fourth-year MTech integrated student of medical nanotechnology for the same. And I request all of you to kindly rise for the invocation. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கிழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெக்கணமும் மதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிடமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I now request our Honorable Vice Chancellor, Professor S. Vaidya Subramaniam, to address the Venerable Assembly. Manya Dr. Mahendra Nath Pandey ji, Honorable Union Minister for Heavy Industry, Shri Vijay Mittal ji, Joint Secretary, members from the Ministry of Heavy Industries, Dr. Rao, our guiding leader in this MHI center, faculty colleagues, student friends, special invitees, friends from the print and the electronic media. At the outset, a very warm welcome to all of you. Usually when I deliver the welcome address, it is a little lengthier, but in the interest of time, I am taking this opportunity to welcome the Honorable Minister, not only on behalf of Shastra, but on behalf of the entire Tanjavur district itself, because it is in this Tanjavur district that we are seeing a world-class facility being dedicated to the nation by the Honorable Minister today. And also important is the fact that the chosen technologies for this facility aligns with our Honorable Prime Minister's vision to become the world's #3 economy very soon. And I'm sure
we will definitely achieve that, because the Honorable Prime Minister has always been focusing on Digital India and the Atmanirbhar Bharat, indigenizing the manufacturing. And what more appropriate than indigenizing the capital goods sector in India, than the fact that we try to reduce the imports that get into the capital goods sector. The capital goods sector is the spine of the Indian manufacturing, and the Honorable Prime Minister's vision is that India should be the manufacturing hub for the world. And it's in that direction that this Capital Good Accelerator Center here is established with a generous grant from the Ministry of Heavy Industries as well as industry partners, and not only by way of technology development, also by way of training to build capacity and generate skilled workforce. So the unique thing in this facility is that we are working both towards new product development as well as training manpower who can work in these new technologies in this future. With these few words, I'm extremely happy that the Ministry of Heavy Industries has chosen Shastra for this unique facility. And this is one of the very few facilities in the country that has been established. And I am sure I will definitely, I meaning the entire Shastra family, will definitely rise up to the occasion and deliver the objectives as promised, and always assure that we will do our best, not only in this, but in the future projects to come. With these few words, I welcome the Honorable Minister again and all the invitees who have come here, and I wish all of you a good day. Thank you very much. Thank you, sir. I now request our Vice Chancellor, sir, to present a memento as a token of our gratitude to the Honorable Minister. I request Professor R. John Bosco Balaguru, Dean Sponsored Research, to felicitate the Joint Secretary with a memento. I now request Shri Vijay Mittalji, Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries, to put forth the special address. Most honored and respected Union Minister for Heavy Industries, Government of India, Dr. Mahendra Nath Pandey, sir. Respected Vice Chancellor of Shastra University, Dean Swaminathan Saab, and Dean Research available on the stage with us. Before I start my few words, we all are here to listen to our Honorable Minister, sir. But I noticed when we entered into this auditorium, we had a very silent welcome for our sir. So I want all of you to have a big round of applause for sir. I suppose there are more than 500 or 700 young, energetic students in this hall. So their presence must be felt through the sound of their applause, so that on the sound from here goes up to Delhi, that Union Minister for Heavy Industries is here in Shastra with us. We all are honored with his presence today.
So, as Honorable VC Sir said, Shastra University is one of the premium university of the area, and we are very honored as Ministry of Heavy Industries that our Honorable Minister did agree for their project. And today, Honorable Minister inaugurated some of these projects which have reached the advanced stages. Some of the few facts which have become realizable with time, and I need to appreciate the university for that reason to create a sense of belief and trust all of you young man, young students, young buddies who are here, to appreciate for yourself that you are one of those lucky ones in the country who have got this opportunity to study in this esteemed university. So when we tied up with the Ministry of Heavy Industry with the Shastra University for this accelerator and the project wherein all these young minds are developing 9 technologies for the nation, which will reduce the imports, and not only reduce the imports, but help all of us in becoming a net export country in the near future to come, apart from becoming the 3rd largest economy, as our Honorable Prime Minister do say and take an assertion from all of us to support this national cause. It will help us in developing such technologies which the nation needs, and we should not be dependent on import for such needs. So we started this project barely a year ago. I'm sure even a year has to complete for that, and it is heartening for all of us to see here that all those projects are in the finishing stage, some of that have reached prototype stage. And what is more heartening to see that all of you guys who are sitting today on the other side are taking extraordinary interest in learning those technologies and learning those skills and acquiring those skills which will make you job ready. And let me assure you, all friends, after visiting the Shastra University today, I am sure that you have a bright future ahead. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir, for your words of encouragement. Ladies and gentlemen, I feel privileged to request Dr. Mahendra Nath Pandey, sir, Honorable Minister, Ministry of Heavy Industries, to share his words of wisdom with us. Please, sir. शास्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी तंजावुर के आप सभी स्टूडेंट्स के बीच मैं यहाँ डायस पर प्रेजेंट MHI मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर विजय मित्तल और आपके सम्मानित वाइस चांसलर प्रोफेसर SB सुब्रमण्यम, प्रोफेसर S स्वामीनाथन, प्रोफेसर बालागुरु, मेरी टीम में निखिल गजराज और हमारे अन्य टीम के साथी, आप सभी हमारे स्टूडेंट्स और मीडिया पर्सन, आप सबको मैं अपनी तरफ से शुभकामना और अपनी तरफ से आप सबको बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टीम का कैबिनेट मेंबर होने के नाते ऑनरेबल PM की तरफ से भी आपको वेल विशेस कन्वे करता हूं। जी, आप ट्रांसलेट करेंगी? एज यू विश सर, अगर आप चाहें तो मैं कर सकती हूँ। आप इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में मैं कर दूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं
आज जो मैंने इनोग्रेट किया, आपकी जो लैब्स हैं, आपके जो नए इनोवेटिव आइडियाज से जो आपने अच्छे पहल किए मेरे मंत्रालय के प्रोजेक्ट के तहत, और अपने तरफ से एक्सीलेंट काम हुआ यहाँ, मैं उसके लिए बहुत उससे जुड़े लोगों को और उनको गाइड करने वाले प्रोफेसर्स को सबको बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। Sir says that the labs that he has inaugurated today, so he congratulates all the people associated with the lab for the excellent work. मेरे मन में बहुत दिनों से आपके बीच आने की इच्छा थी। मेरा प्रोग्राम 2 बार पॉलिटिकल रीजन से कैंसिल हुआ, लेकिन नाउ आई एम डिक्लेयर कैंडिडेट, मैं प्रत्याशी घोषित हूँ पार्टी का, कमिंग पार्लियामेंट इलेक्शन। और आप समझ सकते हैं जो कैंडिडेट होता है उसको मछली की जो अर्जुन को आंख दिखलाई पड़ती थी, उसको केवल अपना चुनाव दिखलाई पड़ता है। लेकिन मैं इस पोजीशन में भी मुझे लगा कि मैं शास्त्रा के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के सामने ऐसा मेरे को मेरी इमेज ये न बने कि ये कैसा मिनिस्टर था, इसने वादा 2 बार आने का किया, नहीं आया, तो वो स्टूडेंट्स क्या इमेज बनाएंगे। इसलिए मैंने कहा कितना भी बिजी शेड्यूल है, मैं इस प्रोग्राम को पूरी तरह कंडक्ट करके ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ फिर रुख करूंगा। तो मैं आपके बीच आया। Sir says that he had been for a long time willing to visit Shasta, but for various political reasons, twice his visit had been cancelled. So now Sir says, now since he has been declared as a candidate from the organization, so therefore, like, Arjun always looked at the fish's eye. So it's election time, so Sir is here. And that's why Sir says that, you might not think that why is Sir been avoiding us? So he is here right now and he has decided he'll finish the entire program and then only he'll head towards its constituency. एक बार मैं फिर से याद कर रहा हूं कि जब पूज्य शंकराचार्य विजेंद्र जी काशी आए थे, आपके वीसी सुब्रमण्यम साहब भी वहां मिले थे, मैंने वही वादा किया था, उनको भी बोला था, मुझे 2 बार बोलना पड़ा, तो मैं यहीं से विजेंद्र जी को भी प्रणाम करता हूं कि अपना वादा पूरा किया, आपके बीच आया। And Sir also sends his salutations to Vijendra ji when he had met Vijendra ji and our Honorable Vice Chancellor Sir in Kashi and had promised that he would visit us. मैं प्रॉपर जिस चीज को हमारे डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट दिया, जिस पर बहुत शॉर्ट में हमारे डिपार्टमेंट के जेएस विजय मित्तल जी ने, जो इसी काम को देखते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। उस पर अपनी बात आपसे शेयर करने के पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं स्टूडेंट लाइफ से मैं दक्षिण के लोगों के ज्ञान विज्ञान, उनके भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी रुझान, चूंकि हम जहाँ के रहने वाले काशी के हैं, और काशी भारत का लघु भारत, वहाँ तमिल के लोग भी हैं, आंध्रा के लोग भी हैं, केरला भी है, कर्नाटका भी है, महाराष्ट्र भी है, पूर्वोत्तर भारत भी है, बंगाल है, बनारस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनारस यूनिवर्सिटी जब मदन मोहन मालवीय ने बनाया, जहाँ का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ सबसे ज्यादा लर्नेड प्रोफेसर मदन मोहन मालवीय जी ने साउथ से ले जा करके वहाँ, और लोगों ने केवल कोई तनख्वाह नहीं ली, कंट्रीब्यूशन के रूप में। इवन भारत के राष्ट्रपति प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने वहाँ एज ए प्रोफेसर, एज ए वीसी वहाँ पर टीचिंग किया स्टूडेंट्स को। तो उस जगह से मैं पढ़ा लिखा, और हम लोगों का आइडिया साउथ के बारे में बहुत हाई थिंकिंग है, और पूरे देश के लोगों ने, इवन बनारस यूनिवर्सिटी का जब नॉर्थ इंडिया की इतनी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय का सृजन करने में कश्मीर तक के लोगों ने अपना योगदान दिया, वो बात लंबी हो जाएगी। तो मैं वहाँ जब पढ़ता था तो वहाँ पर लोगों ने, मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर
पीएचडी करके हिंदी लिटरेचर और जर्नलिज्म से आया। फिर मैं रिसर्च एसोसिएट था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। मेरा इंटरेस्ट साउथ के बारे में इतना था कि मैंने जो अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया यूजीसी में, द नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया एंड लिंक लैंग्वेज, वो यूजीसी ने एक्सेप्ट किया और मुझे डीलिट के लिए हायर लेवल की फेलोशिप मिली। प्लीज, मैंने लंबा बोला है थोड़ा आपका। I'll try my best, sir. So, sir comes from the city of Kashi, which in itself is mini Bharat, because you have people from all the corners of the country there. And the contribution of different people, be it Madan Mohan Malviya, sir, or Sarvapalli Radhakrishnan, has been immense in building up the education system of the city. And sir has had his education, his early growing, and from the very beginning, he was awe-inspired by people from South in context to their contributions to the development as whole. And also, sir has got his PhD degree, and then he has done his journalism. And in UGC, his PhD thesis was entitled on, sir, please pardon me if I'm mistaken, non-Hindi speaking region. And so it was about the non-Hindi speaking belt, which is, of course, southern India. And because of the wonderful work that he had carried out in his PhD, UGC had recommended him the DLIT. बट मैं जो आप सबको अपनी वेल विशेष शुभकामना देते हुए जीवन में आगे बढ़ने का काशी का हूं तो शुभकामना भी देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। कारण क्या, मैं अपनी लाइफ से बोल रहा हूं। प्रोफेसर सुरेंद्र खन्ना यूजीसी के सेक्रेटरी थे, रुड़की विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। मैं अपना डिलीट करते समय ही मैं यूपी असेंबली का एमएलए इलेक्ट हो गया। मैंने उन्हें बोला कि मेरे को या तो आप एक्सेप्ट कर लो एमएलए का कि जो है तनख्वाह लूं, वेतन लूं, सैलरी लूं एमएलए की, या आपकी फेलोशिप ले, मुझे कोई एक लूंगा लेकिन मेरे को ब्रेक मत करिए। उन्होंने कहा नहीं, इंडिया में एग्जाम्पल ही नहीं है, टीचर्स का तो एग्जाम्पल है, कोई रिसर्च एसोसिएट एमएलए हो गया, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। उनका मेरे को एग्जाम्पल बना दो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया। मैं थैंक्स करता हूँ साउथ में आके आज कि मैं फिर डिटेल सोशल वर्क और पॉलिटिकल वर्क में हुआ और डिफरेंट पोस्ट होल्ड करते हुए सम टाइम एमएचआरडी का, चाहे भी यूनिवर्सिटी का कैबिनेट मिनिस्टर, एमएचआरडी का मैं स्टेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ। तो उसी यूजीसी की मीटिंग मेरे अंडरशिप में हुई। ये काल का चक्र है। So, sir says during his tenure as the DLIT, the UGC then secretary, Mr. Surendra Khanna, he had got the offer of being the MLA in the UP Assembly during the same tenure. So he requested Mr. Khanna to either give him a fellowship or to let him draw the salary for his MLA-ship. And therefore, he was lauded for the fact that he was the first research associate who was also an MLA. And this is only destiny where, because of his social political work, that when he was the state minister at MHRD, the entire conversation and discussion regarding MHI, for which he is representing today, that time the discussion came under his reign. So that he is thanking Khanna sir in retrospect coming down to South India. So now students, लाइफ में आप सब आगे बढ़े, आप सब आगे आए, इस एक बार फिर इस शुभाकांक्षा के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आज जहां खड़े हैं, इस तंजावुर के चोल राज्य ने इस भारत को बहुत कुछ दिया है। और ये चोल राज्य का प्रभाव, अगर आप सब में फैमिली के अंदर संस्कृत का अध्ययन करने का इंटरेस्ट होगा तो पुराने भारत को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। और ब्रह्मावर्त का मतलब अफगान से भी आगे पाकिस्तान तो 1947 में हमसे अलग हुआ, और पूर्व में इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिंगापुर इंक्लूडिंग, और इंटायर भारत को इतने दूर तक मैं इस
ऑनरेबल इस धरती को नमन करने आया हूं, और इस धरती को जिसको कि इसी चोल राज्य ने इन टैर्स ब्रह्मावत का मॉडर्न माने मिडिल हिस्ट्री के अंदर इस देश को बनाया था, ऐसे पवित्र भूमि को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। Sir shows respect to this region of the Chola dynasty, where the entire Brahmavartkal, which expanded from the east and the west, and the contributions of the different aspects of the Chola dynasty have been immense, and he salutes the people and the region of the Chola dynasty for their contributions. आज जो भारत का कल्चर, अभी आपने देखा होगा, भगवान रामलला का प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में, और उस प्रतिष्ठा के पूर्व ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिन का अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान पर भी दक्षिण भारत के ही लोगों का मार्गदर्शन था, और उन्होंने एक डिवोटी के रूप में राम के अयोध्या से वन गमन कर लंका विजय तक के पवित्र स्थानों का जो भ्रमण किया, तो कहीं न कहीं उन सब जगहों पर जाने के पीछे रामलला की प्रतिष्ठा के साथ उसकी पात्रता ग्रहण करने का भाव तो था ही, और पूरे देश और दुनिया को बताना एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो चोल राज्य ने अपने हजारों बरस के इतिहास में जो कल्चर, जो विजडम, जो चीजें खड़ी की थी, उसको देश दुनिया को बताने के लिए मोदी जी ने इतनी जो तपस्या, जो प्रयत्न किए। आप उस धरती के हो, आप सब उस दिशा में आगे बढ़ो, ये मैं आप सबको अपील करता हूं। So, sir says you all would remember that for the Ramlalla establishment in Ayodhya, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji was on an 11 days fast. And in that entire concept, the South Indians, so to speak, or the Indians from the southern part of the country, showed the way. The entire story of Ramlalla, which spans from the north and it goes beyond the south, has proven to be so much enriching for the overall cultural development of our entire country. And like Modi ji said, Ek Bharat, Shresht Bharat, the Chola dynasty in their 1,000 years of reign have really contributed immensely to that. And we, being the people from that soil, should be proud of our heritage. अब मैं आपसे उस बात पर आता हूं जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का दूसरा शब्द है, श्रेष्ठ भारत। वो कैसा श्रेष्ठ भारत? तो मोदी विजन है, पीएम का विजन है कि हम आजादी के 75 इयर्स के बाद अमृत काल में ऐसा श्रेष्ठ भारत, और वो चीज आपसे जुड़ी है। ये डायस पर बैठे लोगों को वो ऊपर परमात्मा एक आयु देगा, सबको दीर्घायु करे मेरी कामना है, लेकिन आपको बहुत दीर्घायु करे ये मेरी शुभकामना है। तो आपका जो लाइफ आएगा उसके लिए भारत के 140 करोड़ जो आबादी देश की है, उसमें जो 62% यंग आबादी है, वो उस श्रेष्ठ भारत में 2047 में विकसित भारत में दुनिया के लिए सिरमौर बने, इस विजन पर हमारी मोदी सरकार काम कर रही है। As part of the Shresht Bharat, our Prime Minister's vision is that after the 75 years of independence, when we are in the Amrit Kal, people like you, the youngsters, you are the future. Of course, sir says and wishes for the long life of all the people on the dais, but you have a longer life because you are the future of our country. And in the 140 crore population that we have, 62% is the young population. And therefore, the vision of 2047 of Viksit Bharat heavily relies on you. उस विजन के लिए हमारी मिनिस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने एक कैपिटल गुड स्कीम लॉन्च की है, जिसके चलते दुनिया की बराबरी में, चाहे वो
एग्रीकल्चर के जो यंत्र हैं, चाहे साइंस के फील्ड में जो काम कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जिन जिन कैपेबिलिटी में भारत अभी पीछे है और हमें उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे इंडस्ट्री फ्रेंडली स्कीम बनी है। 80% हम डिपार्टमेंट, हमारा गवर्नमेंट अनुदान है। जैसे आपके यहाँ हमने कैपिटल स्कूल एक्सपेंडिचर से जो बजट दिया, उस बजट में 40 करोड़ 8 लाख का बजट है। इसमें 33 करोड़ 0.1 लाख यह हमारे डिपार्टमेंट से आपको कंट्रीब्यूट किया, और शेष इसके अंदर 7 करोड़ सम लाख इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी ने इसमें अपने को प्लस किया। इंडस्ट्री फ्रेंडली स्कीम दिया ताकि जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो वो चीजों को हमारे कुल अब तक 10 से 11-12 एक्सीलेंस सेंटर बन चुके हैं देश में, जो ऐसी चीजों पर अपने प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और उसमें से देश के लिए इंपोर्ट की कम किया जाए और हम उस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ रिसर्च करके हम उसे डेवलप करें और हम अपनी जरूरतें पूरा करें और उसको खुद हम दूसरे देश के लिए एक्सपोर्ट कर सकें। So achieving global competitiveness in various verticals of the Indian capital goods sector has been the primary vision of the MHI. And for that, the MHI has released funds to accommodate the collaboration between the industry and the institution. And also not to forget that so far 10 to 12 centers have already been created. And the main objective of this vision is to reduce the import so that we can uplift Make in India. इस दृष्टि से जो मैं इस बात के लिए मैं कांग्रेचुलेट कर रहा हूं, बधाई देता हूं, मोस्ट रिस्पेक्ट के साथ अभिनंदन दे रहा हूं यहाँ के प्रोफेसर्स को, वाइस चांसलर साहब को और इनके इंडस्ट्री पार्टनर्स को, कि हमने जिन जिन को ये प्रोजेक्ट दिए हैं वो भी सभी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने ये जो आपको जिस चीज के लिए आप ये 3D प्रिंटिंग, 4D बायो प्रिंटिंग, इलेक्ट्रो स्पिनिंग मशीन, कंप्यूटर दृष्टि प्रणाली, सामग्री देखरेख प्रणाली, स्वचालित प्रक्रिया लाइनें, इन सब में और शास्त्रा विश्वविद्यालय में जो केंद्र रोबोटिक्स, IIoT, 3D प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, AR/VR में उन्नत सुविधाएं, ये जो आप लोगों ने सब चीजें में अपने लैब स्थापित किए, अपने एक्सीलेंट। कल मैं त्रिची भेल के अंदर था, वहां भी मैं 3D प्रिंटिंग की लैब देख रहा था, तो मुझे बताया उन लोगों ने कि ये सब चीजें शास्त्रा इसी को तैयार कर रहा है। ये जो आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया उस फंडिंग का, मैं आपके कांग्रेचुलेशन के साथ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर के होने के बावजूद मैं रिस्पेक्ट पे करता हूं यहाँ के सारे प्रोफेसर को, सबको। First of all, thank you, sir. And sir congratulates all the professors, the stakeholders, the industry partners of Shastra. Sir says that, of course, the fund has been released to several other organizations and centers also, but he's extremely impressed with the way it has been conducted, or the work has been conducted by Shastra. So he had visited our different labs where we had showcased our 3D printing prowess, our robotics, our IoT. And sir really congratulates for we having been properly utilizing the funds that had been allocated to us. हमारा डिपार्टमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2023 में जब इन्होंने मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया था, उसमें उन्होंने अगली पीढ़ी के लिए जो टेक्नोलॉजी का जो प्रौद्योगिकी को देश में लाने की कोशिशों के बारे में ऐसे उन्होंने 100 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ये अपील की थी कि आप सबको इसमें आगे आना चाहिए और 5G उपयोग हो या अन्य विषयों का सबको उन्होंने इन्वोट किया। उन्होंने हर दृष्टि से जो बातें कहीं उस दृष्टि से, और खास करके यंगस्टर्स के लिए, तो उसमें लगातार हमारी सरकार इस पर बल दे रही है, लगातार इसको आगे बढ़ाने में लगी हुई। The Honorable Prime Minister, in his inaugural address at the recently concluded Indian Mobile Congress 2023, had announced the arrival of next generation technology in India.
And not only is the technology next generation, but is also driven by the next generation youth. So the department is heavily looking forward to accentuate or to visualize the Honorable Prime Minister's vision of making it to the next level of technology. इस दृष्टि से प्राइम मिनिस्टर ने जो आह्वान किया कंट्री के यंगस्टर्स का, और मैं वो सारी पॉसिबिलिटीज शास्त्रा यूनिवर्सिटी के आप सभी बॉयज एंड गर्ल्स जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप कहीं ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई ज्योतिषी हूं तो काशी का पंडित, लेकिन ज्योतिषी नहीं हूं। आपके हंसते बोलते चेहरे और आपका मस्तिष्क बना रहा है कि सारे टैलेंट आप शास्त्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अंदर है। Once again, thank you, sir. So what sir says, of course, he is a Pandit from Kashi, but he is no astrologer. However, the bright faces and the foreheads that he sees in you, the bright young mind sitting here today, he is sure that you are going to be the face of the vision that the country has for us. मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि जो पीएम का विजन है, सभी एस्पिरेशनल फील्ड में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सोशल सर्विस, इंडस्ट्री 4.0 और ये जो अवसंरचना कनेक्टिविटी है ड्रोन की, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में, 5G, 3D प्रिंटिंग, डिजिटल उभरती जितने AR VR, इन सब के अंदर जो भी स्वदेशी अनुसंधान विकास है, इसमें शास्त्रा यूनिवर्सिटी एक्सीलेंट काम कर रही है और डीपली काम करके आगे आने का मैं आह्वान करता हूं। I encourage all of you to really work even better than this. You're already doing good work, but even better than this in the upcoming and aspirational areas like automation in industries, infrastructure, connectivity, electronics, manufacturing, 5G, 3D printing, AR, VR, and indigenous R&D. मैं आपके बीच में अंत में ये बड़ी खुशी के संग कहना चाहूंगा लास्ट में कि हम जो और इस साहब के जो लैब्स और जो उसका उद्घाटन हमने किया, मुझे बेहद खुशी है कि शास्त्रा विश्वविद्यालय रियल अर्थों में देश का एक सच्चा डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और मैं आज रियलाइज हुआ कि जब मैं कोविड पीरियड में, जब देश के अंदर कोरोना में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उस समय भारत का स्किल मिनिस्टर था, तो विजयेंद्र सरस्वती जी एक स्किलिंग प्रोग्राम के लिए एक वर्चुअल लेक्चर में हम वो चीफ गेस्ट थे, मैं भी उससे कनेक्ट था। तो उनके डिटेल उनकी स्टडी पे मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, ये तो शंकराचार्य है, इतना ज्यादा गहन अध्ययन इनका। तो मुझे कल से आज पता चला कि स्किलिंग के बारे में भी आप सब बड़े अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ काम करते हैं और काफी बड़ा काम करते हैं। इसके लिए भी मैं इस यूनिवर्सिटी को कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि पीएम का विजन है, 2 शब्द उनके हैं, आज के यंगस्टर को जाना चाहिए, देश को आगे तभी ले जाना है, हर व्यक्ति स्किल्ड हो और रीस्किलिंग, अप स्किलिंग, ये दोनों को जुनून होना चाहिए, और जिससे स्किलिंग के अलावा, इनोवेटिव आइडिया के अलावा, रिसर्च ओरिएंटेड इन सारे प्रोजेक्ट के अंदर रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म के विजन पर इसको चलने का आपका आह्वान करता हूं। So sir says, while inaugurating the labs in this campus, he realized that in real terms, Shastra is a deemed university. And reflecting back during the COVID era, when the mission of India was Skill Bharat, at that point in time, listening to Vijayendra sir's one online session, he realized that we are making much progress even in the area of skill development. And as our Honorable Modi ji has said, that for skilled India, every Indian should be able to bring forth their skill, and that's how we will get into reform, transform, and perform. मैं आप सबके बीच में लास्ट में ये एश्योर कर रहा हूं, बट आपके स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि आज तो चुनाव के पीरियड में जा रहे हैं, आज मिनिस्टर एश्योर कर रहा है। मिनिस्टर एश्योर कर रहा है कि MHI, भारत सरकार, आप शास्त्रा यूनिवर्सिटी ने, जैसे अभी एक्सीलेंट आइडिया दिया VC साहब ने, सुब्रमण्यम जी ने, कि ड्रोन, जहां आज हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है कि देश में स्टार्टिंग में 15,000 हम ड्रोन दीदी, हमारी
महिला शक्ति, मातृशक्ति की बेटियां यहाँ बैठी है। ड्रोन दीदी मीन्स गांव में भी, विलेजेस में भी लोग बैठ के और ये जो फर्टिलाइजर का डिमॉन्स्ट्रेशन, फर्टिलाइजर को और तमाम चीजें ड्रोन से। अभी एक्सीलेंट आइडिया कि जैसे ऑर्गन सप्लाई में ग्रीन चैनल बनाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, इंक्लूडिंग लाइफ सेविंग के लिए, हम ड्रोन से ऑर्गन सप्लाई के प्रोजेक्ट को काम कर सकते हैं। इतना एक्सीलेंट आइडिया दिया, तो इस दृष्टि से मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि हमारा एमएचआई शास्त्रा यूनिवर्सिटी के संग ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट पर हमेशा साथ रहेगा, ये आपको भरोसा देता हूं। और भरोसा इस नाते दे रहा हूं कि पूरा भारत का प्रेम मोदी जी के संग है और दक्षिण का भी प्रेम पहले की तुलना में ज्यादा है। इस नाते मेरे भरोसे का भरोसा रखिए। So sir is assuring us not because it's election time around, but because he has genuinely visited the campus and he is impressed with the quality of work that we have been doing. And he has assured, based on an excellent idea being given by our Honorable Vice Chancellor, sir, where Modi ji's vision of drone Didi, that is, empowering women folk, and also the use of drones in case of village for supplying fertilizers and for allied purposes, VC sir had suggested that why not use drones for supplying organs for organ donation, which right now uses green channels. So this excellent idea has really impressed our minister, sir, and he has assured, and he assures you to believe in his assurance, not just because it's election time, but he genuinely feels in the cause of it. मैं आप सबके बीच, आप सभी स्टूडेंट्स को आपके भावी जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ और आपके माध्यम से तंजावुर और कुंभकोणम और चेन्नई, जो आपके और 2 कैंपस हैं, अदर कैंपस, सभी स्टूडेंट्स को अपनी शुभकामनाएं, अपनी वेल विशेस देता हूं। और अपने ओर से पर्सनली मैं यहाँ आके मैं बहुत ही अच्छा अनुभव किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपके बीच फिर आने का अवसर दे, और मैं आऊंगा और आप सबको अपनी फिर शुभकामनाएं, आपके संग जुड़ा रहूंगा। और आप स्मृति चिन्ह, मेमोरी के लिए बहुत जगह बहुत चीज मिली, लेकिन ये मेरी लाइफ का ये जो सितार का आपने दिया है, ये बहुत रिमार्केबल मेमोरी का आपका इस उपहार है। ये मैं हृदय से स्वीकार कर आपको धन्यवाद देता हूं, यहाँ की संस्था को। एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकांक्षलु। नमस्कार। Thank you, sir. Although I'm sure you have already got the gist of what sir had said, but just to translate it, sir wishes all of us over here a very, very good journey ahead. And he has been really impressed by the work. And he also wishes that he gets another opportunity to visit all of us. And of all the good memories that he has made, one memory is special for him, the Veena which had been gifted to him or which has been conferred to him. So with that, he again wishes all of you, and we, on behalf of the entire Shastra fraternity, should thank him for being here and encouraging us with his words. Thank you, sir. And sir, I apologize if I have missed out any points. It would be an honor to request Dr. Mahendra Nath Pandey, sir, to present the certificates to the students from the first training batch. And I would request Professor R. John Bosco Balaguru to read out the names of the students. Right, please. Yogesh Raj, Deepana, Karkulali, Mahalakshmi, Dinesh. Pooja. I request Dr. Leela Vinodan, the coordinator of the MHI Shastra Training Center, to receive the certificates on behalf of all the other students.
நிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சீக்கிரம் வாங்க. மொத்தமா வாங்கிட்டாங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து வாங்க. சீக்கிரம் வாங்க. எல்லாரும் வாங்க. ட்ரைனிங் சென்டர் போவாங்க. எல்லாரும் Honorable Minister, Ministry of Heavy Industries, Sri Vijay Mittalji, Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries, Vice Chancellor, esteemed guests, faculty members, and my student friends, a very good afternoon. It is with immense gratitude that I extend my heartfelt thanks to the Honorable Minister for inaugurating the Technology Accelerator at Shastra. Sir, today your visit holds a very, very special significance as it perfectly aligns with our Honorable Prime Minister's visions, which you also encapsulated in your speech for an Atmanirbhar Bharat and a Viksit Bharat. The vision for a developed Bharat requires contributions from every one of us so that not only every Indian has access to opportunities for growth and innovation, but also provides the same to the entire world. We are deeply grateful to your inspiring words and invaluable insights that you have shared with us today, sir. Thank you very much for being with us today, despite your very, very busy schedule. I would like to thank the Ministry, Secretary of MHI, Joint Secretary, and the entire team for placing confidence in Shastra and supporting us with this MHI Accelerator project. I would also like to thank the district administration, the collectors of Tanjavur, Tiruchi, police and revenue departments for their entire support. And I would like to thank all of you who have been enabling us for a successful conduct of this event. Thank you very much. Thank you, sir. May I now request all of you to kindly rise for the national anthem and sing along. भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे